So what is prop drilling? Prop drilling is a process of passing data from one component via interconnected components to the components that requires it. prop drilling में क्या होता है कि आप एक कंपोनेंट से वाया अदर कंपोनेंट्स जो कंपोनेंट को डेटा रिक्वायर्ड होता है आप सेंड करते हैं. So that is called the prop drilling problem. Suppose in this here component A and component F want to use the data that is present in component A. यहाँ पे डेटा कंपोनेंट F यूज करना चाहता है. अकॉर्डिंग टू prop drilling आपको डेटा पास करना होगा D कंपोनेंट में. सपोज काउंट इज द डेटा एंड देन आपको पास करना होगा E कंपोनेंट में. पहले आपका ई डी में पास करोगे, फिर देन आप ई कंपोनेंट पास करोगे, देन आप एफ कंपोनेंट डेटा यूज कर सकते हो. पहले आप देख सकते हैं प्रॉप यहाँ पे पास करना होगा, प्रॉप को यहाँ, देन आप प्रॉप आप यूज कर सकते हो. तो डेटा यहाँ से इस तरह से ट्रांसफर होता है इस कंपोनेंट में, देन इस कंपोनेंट में, और देन इस कंपोनेंट में आप डेटा यूज कर सकते हो. दैट इज कॉल्ड प्रॉप ड्रिलिंग. तो we can avoid this prop drilling problem with the help of two things. The one is context API and other is Redux. Context API is a React inbuilt functionality, right? So with the help of that, you can avoid this problem. So you can directly use the data of this component into the app component. With the help of Redux is a predictive central container. In this, also you can use the data directly in the app components. So these two things avoid the problem of prop drilling. So this is the prop drilling problem. We will see with the help of example also how prop drilling works. So prop drilling React. Suppose we have a component parent dot js, and we have another component child dot js. And in this app component, suppose we need a use state from React. So first import the use state. We will implement हम एक काउंटर के द्वारा हम समझेंगे how property works. तो const count set count use state. इनिशियल वैल्यू सपोज की 0 है, तो इनिशियल वैल्यू 0, आप इसके लिए इनिशियल वैल्यू 0 आप and then what will we do, we will import this parent component we will import parent from parent. तो इस parent component को import करने के बाद हम यहाँ पे इसके में डेटा पास करेंगे. parent we will pass the prop. इन parent component पे हम count prop पास करेंगे, count, and we also pass set count we also pass set count here. So हम यहाँ टू पास कर रहे हैं, एक काउंट और सेट काउंट. these two we are passing in this parent component. Now in parent component, like function parent and return, then export default parent. So we will import child component in here, or child from child, and props. हमने ये जो प्रॉप यहाँ पास किया है, इस प्रॉप को दिया टू प्रॉप्स. हम यहाँ पे इस कंपोनेंट को एक्सेप्ट करेंगे props with the help of props. Now div, right, then we will curly brace में देखेंगे props dot count. तो आप देख सकते हैं इनिशियल वैल्यू 0, so this value 0, it will show here to 10, then it would be 10, 0 to 0. And now again we pass
the prop to the child component. हम child component prop पास करते हैं, तो set count equals to set count, हम इसमें पास कर दिए इस prop को, और इसको यहाँ से कॉपी करके चाइल्ड कंपोनेंट में चाइल्ड और ये चाइल्ड, राइट। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसमें प्रॉप्स है, यहाँ पे एक बटन बनाएंगे, इस बटन में प्लस ऐसा करेंगे, प्लस सेट काउंट इज नॉट डिफाइंड, ओके। सो प्रॉप्स ऑन क्लिक पास करेंगे हम, ओके। इसके अंदर लिखेंगे हम प्रॉप्स डॉट सेट काउंट, इसके अंदर हम लिखेंगे काउंट 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 प्लस 1, सेट काउंट इज नॉट डिफाइंड, ओके। प्रॉप्स डॉट सेट काउंट यहाँ पास करेंगे, प्रॉप्स डॉट सेट काउंट, राइट। So now we implement this. So like you're working. So this is a prop drilling. So we have a data here and we pass the data to this parent component. We ask the two props, one is count, the other is set count. Then parent component we pass the prop to the child component, set count. And in child component we are using this button set count. In parent component we are using this count. So this is the prop drilling problem, and we can avoid this problem with the help of context API and Redux. And I will explain this concept in another video, how you can remove this problem with the help of context API and Redux.